All right, the most awaited India News Munch is here. We are counting down to the 2022 edition of India's biggest political conclave, India News Munch. It will kick off 9 a.m. onwards today. In attendance will be an unprecedented lineup of guests that include 14 union ministers, 26 members of the parliament, governors, chief ministers and state leaders. It will be a non-stop 13-hour jam-packed conclave that will involve the BJP and opposition's biggest credible voices. It is an accurate display of what we stand for here at NewsX. News, not noise. So stay with us throughout the day today as we kick off India News Munch. Joining us on the broadcast are my colleagues. We will be having a round of conversations with them. I have Manohar joining me on the broadcast to take us through about the preparations today that is happening for India News Munch. Very good morning, Manohar. Give us a view of all the preparation today that are set for India News Munch, which is about to begin shortly at around 9 a.m. देखिए बिल्कुल इंडिया न्यूज़ का जो कॉन्क्लेव है 2022 ये एक महापॉलिटिकल कॉन्क्लेव है जिसमें तमाम नेता अपने मन की बात कहेंगे। पॉलिटिकल्स देश में क्या सिनेरियो चल रहा है, सरकार की क्या पॉलिसी है, इन सब तमाम चीज़ों पे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। अगर हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स तमाम कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया होंगे, पीयूष गोयल होंगे, नरेंद्र सिंह तोमर होंगे, अनुराग ठाकुर होंगे। और वहीं अगर हम देखें तो कई इस तरह की फिल्म हस्तियां भी होंगी जो तमाम चीज़ों को लेकर के बात करेंगे, चाहे वो चाइना इशू को लेकर के हो, राहुल गांधी के मामले को लेकर के हो, या सरकार मोदी सरकार कोविड को लेकर के क्या कर रही है। क्योंकि हमने देखा कि कल भी जिस प्रकार से कोविड को लेकर के लगातार हाई लेवल की बैठक हुई है, ये तमाम आज इंडिया न्यूज़ पे सुबह 9 बजे से लेकर के रात करीब 10 बजे तक आप देखेंगे। एक एक बड़े फेसेस आएंगे, तमाम नामी गिरामी हस्तियां मौजूद रहेंगी और अपनी मन की बात करेंगी। जी Right, Manohar, I will also come back to you at this point of time. Jatin is also with us on the broadcast to give us his view on this. Jatin, a big day today. All political leaders, of course, big names from different political parties, also be it the centre and the opposition, are going to come together and they are going to put the stakes pretty high. देखिए बिल्कुल देश के लिए ये सबसे जरूरी वो वॉइसेस हैं इस समय, जो देश की सबसे बड़ी वॉइसेस हैं, और वो आज आईटीवी नेटवर्क पर होंगी। इंडिया आईटीवी नेटवर्क का सबसे बड़ा ये राजनीतिक मंच जो है वो होने जा रहा है। तो हर वो वॉइस हर दर्शक के लिए आज बेहद जरूरी होगी जिनको वो सुनना चाहते हैं, चाहे देश में किसी पॉलिटिकल सिनेरियो की बात हो जो लगातार बदलता रहता है। आरोप प्रत्यारोप हम देखते हैं लगते हैं, इंडो चाइना जो मैटर है उस पर भी तमाम जो बातें हैं वो लगातार हुई हैं, लेकिन उसका क्या निचोड़ है वो आज देश के सामने आईटीवी नेटवर्क के जरिए आएगा। इसके अलावा क्योंकि हमने देखा है कि चाइना में कोरोना की एक बड़ी लहर आई है, उसका भारत पर भी जो चिंता है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है उसकी, और उसको लेकर भी क्योंकि मनसुख मांडविया हमारे साथ मौजूद होंगे, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, तो तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिन पर बात होगी। लेकिन देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच, हर बड़ी वॉइस आज आईटीवी नेटवर्क पर होगी। तो देश के हर दर्शक के लिए, हर भारतीय के लिए इस जो मंच है उससे जुड़ना बेहद जरूरी है, और सब तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और राजधानी दिल्ली से क्योंकि इस मंच की शुरुआत होगी, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो जाहिर तौर पर इंटरनेशनली होगा, तो सबकी निगाहें उस पर बनी हुई हैं। और जैसे जैसे जो वक्त है आगे बढ़ रहा है, कुछ देर में तो तमाम जो हमारे वीआईपी गेस्ट हैं वो आईटीवी नेटवर्क पर होंगे और तमाम जो उनकी वॉइसेस हैं वो सुनने को मिलेंगे। और साथ साथ न सिर्फ राजनीतिक जगत बल्कि बता दें कि बॉलीवुड जगत की हस्तियां भी मंच पर मौजूद होंगी, तो उनसे जुड़े तमाम पहलू और जो कुछ चल रहा है इस समय देश में, जो एक्टिविटीज चल रही हैं, खासकर अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो से देखें या फिर बॉलीवुड जगत से भी देखें, तो उस सब चीजों से रूबरू होने का मौका दर्शकों को आईटीवी नेटवर्क के इस सबसे बड़े मंच के माध्यम से मिलेगा। Right, Jatin, I'll come back to you. Manohar, if you're still there with us, you know, at this point of time, we are here to set a platform for these big leaders to come together and speak about the political scenario of the country. But as we say here, India News and on NewsX, we are not here to make noise, but we are here to give out news. How do you also see this, Manohar, going ahead?
देखिए अगर हम देखें ये ITV नेटवर्क का सबसे बड़ा महाकॉन्क्लेव है, एक महापॉलिटिकल मंच है, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमने तैयारी की है, हमने तमाम नेताओं से बात की है और उसके बाद इस मंच का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। और आज सुबह 9 बजे से ही आप देखेंगे कि तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो है इसे लेकर के अपनी बात रखेंगे, चाहे देश की तमाम राजनीतिक गतिविधियों को लेकर के हो, सामाजिक गतिविधियों को लेकर के हो, या जो हमारे कल्चरल ताना बाना है उनको लेकर के हो। अभी हमने देखा कि बॉलीवुड में किस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है मूवीज को लेकर के, या हमने देखा कि अमिताभ बच्चन ने किस प्रकार के बयान दिए। ये तमाम जो है चीजें आप न सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा और एजेंडा की बात करेंगे, बल्कि आने वाले न्यू ईयर में किस तरह की चीजें होंगी, ये तमाम चीजें जो है सो पॉलिटिकल इस मंच में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आज का सबसे बड़ा इंडिया का सबसे बिगेस्ट जो है सो पॉलिटिकल कॉन्क्लेव होने जा रहा है। जी Right, Marwa, stay on with us. Ajay Jandyal is also joining us at this point of time. Ajay, India News Manch is going to kick off at 9 a.m. and we have leaders and policymakers from across the states who will be joining, and they will be speaking on the political scenario of India. Tell us about the preparations and your reactions also on this and the excitement amongst people. Ajay, can you hear me? Yes, now I can hear you. Right, Ajay, I was asking that today it is going to be a jam-packed 13-hour mega conclave, India News Manch, which is going to kick off shortly at around 9 a.m. And there is a lot of excitement amongst people and the leaders who are going to be joining us. So what do you have to say? Well, yes, every year I remember that the politicians, the ministers, the opposition leaders and the lot of other people, they participate in our Manch, and definitely they were even eagerly waiting for the same day, because we know that how they love it and how we basically justify each and every voice here on Manch, and definitely the time is over, and after only few minutes this Manch telecast will be going to be aired by from our studio, and definitely the people, those who are participating, the big names and big politicians, big ministers, they are going to participate in and share their view on the different perspectives, on the different issues. If we talk about the government, definitely they'll be able to share what government is trying to do for the country, for the development, for the issues, for the whatever the issues are related to the people, related to the development and other. And as far as the opposition is concerned, definitely they will also try to raise their issue with against the government, that where the government have failed to serve the people of the country. So this basically Manch is all about issues of people. It is all about the public, that what they are looking for, what they are expecting, what their expectations are, and what they will be delivered, or they are delivered till now. So this is going to be a very big Manch, and definitely the people, thousands and lakhs of people all over the not only the country but all the world, they are eagerly waiting, and their time has come that when they will be able to listen and hear and see their own people, those who have been elected, those who are not elected, those who are in the opposition, that what they think and what they are doing. Right, Ajay, stay on with us. We will also come back to you. Jatin, I come to you at this point of time. Tell our viewers about all the big names who are going to be joining us from talking about chief ministers or governors or the top ministers from the center. Who are the top names that we will be covering all day on NewsX and India News?
देखिए, जैसा कि नाम से ही साफ है कि देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच, तो हर जो राजनीतिक जगत के जो दिग्गज हैं वो तमाम मौजूद रहने वाले हैं, और उनमें बड़े बड़े नाम हैं। चाहे हम केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात करें, पंजाब के सीएम भगवंत मान साहब की बात करें, एचडी देवगौड़ा, इसके अलावा गजेंद्र शेखावत, और संजय सिंह हैं, मनीष सिसोदिया हैं, ऐसे तमाम बड़े नाम हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि बॉलीवुड जगत की भी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो बॉलीवुड जगत से जो एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह हैं वो मौजूद रहने वाली हैं, और तमाम दूसरे जो फील्ड से जुड़े हुए जो दिग्गज हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो बड़े बड़े नाम हैं इसमें, और धीरे धीरे जैसे जैसे अब वक्त जो है नजदीक आ रहा है, तो तस्वीर और पूरी तरह से साफ हो रही है, और इंतजार दर्शकों को हो रहा है लगातार कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस समय देश का है उसका निचोड़ क्या है, उस पर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ एक्टिविटीज है जिसको वो समझना जानना चाहते हैं। उस हर एक सवाल का जवाब दर्शक को आज आईटीवी नेटवर्क पर मिलेगा, और इसीलिए दर्शक आईटीवी नेटवर्क से जुड़ता आया है और हमेशा जुड़ा रहा है कि हमारा ये जो एनुअल कॉन्क्लेव, ये मंच जो है देश का सबसे बड़ा मंच ये कहलाता है, और हर बार इसे जो दर्शक है वो पूरा प्यार देते हैं, और तमाम सवालों के जवाब क्योंकि उन्हें इसमें मिल जाते हैं, तो राजनीतिक जगत के हर बड़े दिग्गज यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और आज दर्शक को उनके हर सवाल का जवाब, जो भी वो तमाम जो एक्टिविटीज हैं देश में चल रही हैं उनसे जुड़ा हुआ जानना चाहते हैं, वो सभी सवालों के जवाब उन्हें मिलेंगे। Right, Jatin, I'll come back to you. Manohar, if you're still there with us, at this point of time, we are raising a huge voice there in the political industry, because there will be some face-off sessions which will be very interesting to watch for our viewers between the parties, the political parties, be the opposition or the centre. We are hosting some important and significant face-offs, and the agenda will be set pretty high, Manohar. ऑफ कोर्स, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और अब से अराउंड आफ्टर 40 मिनट्स हमारा आईटीवी नेटवर्क का ये मंच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये महा कॉन्क्लेव स्टार्ट हो जाएगा, और हम अक्सर एजेंडा सेट करते आ रहे हैं, और आईटीवी नेटवर्क हम इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो ऐसी स्थिति में अब इंतजार करना पड़ेगा दर्शकों को कि हम किस तरह से एजेंडा सेट करते हैं, क्या कुछ रहता है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा कि इन दिनों सड़क से लेकर के संसद तक तमाम इश्यूज को लेकर के चर्चाएं होती है, लेकिन उन चर्चाओं में स्पेस नहीं होता, हंगामा होता है। लेकिन आज हम हंगामा नहीं बल्कि मुद्दे पे बात करेंगे, और मुद्दे को लेकर के ही लोग जो है सो इसे इवेल्युएट कर पाएंगे कि आखिरकार ऑपोजिशन क्या चाहता है, पब्लिक क्या चाहती है, और सरकार क्या चाहती है, क्या मंशा है। और न्यू ईयर आने वाला है, तो न्यू ईयर में इनके क्या रिजोल्यूशंस होंगे, ये तमाम इश्यूज होंगे जिसे लेकर के आज हम मेगा कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं, और काउंटडाउन शुरू हो गया है। Right, Manohar, stay on with us. Ajay Jandyal, I come back to you. It is about the credibility of journalism that we are talking here today on India News Manch, because there are around 30 sessions, and there will be it's a 13-hour long jam-packed complete day telecast that we will be doing, and we are calling it as India's biggest political conclave. Of course, as we know, we have big sessions with big leaders today, and all the leaders will be joining us today, and we start from 9 AM onwards. Ajay, when it comes to showcasing the credibility of journalism, we are no less here. Well, yes, we always stand tough as far as the credibility is concerned, and we always ensure that people's voice should be raised. We also preferred that we always prefer that the voices of both the side and each and every aspect has to be highlighted, so that people can select, because we are not the judge. We are the platform. We can definitely give a platform to the people, those who have raised their issue, those who have addressed the people's issue, and then those who are in the part of delivering as far as the government is concerned. So
we stand tough on our credibility, and that's why since 2008 we are standing tough, and we are addressing the people's issue. We are listening to the people and definitely taking their issues up with the government, and we are also taking the point and perspective of the government. So that basically makes us credibility much higher, and that's why we have been able to, we can say that run this long journey from 2008. So that is why people loves us, and that's why not only 1, 2 or 3, but lot of ministers, lot of opposition leaders, lot of many of the governors and chief ministers of the states, they are also coming and joining us. Celebrities from the film industry, celebrities from the different part of life, they are also coming and participating with us for last many years, and that is the reason that this which shows that we are maintaining our credibility, and we are ensuring that no one feel that we are doing something which is biased, which we are showing something which is biased, and that may make us proud also. And every team member, those who are working at each and every nook or corner of the country, and the lot of people, those who are working to make it success, to make it success, and to ensure that credibility remain like this every time. That basically is the contribution of our team members and the team which is working round the clock without any stop, without any rest to make it possible. Right, Ajay. Jatin, if you can hear me, our views on our digital platforms at this point of time have also increased. Millions of views we are getting each day, and we are going out there. We are quite proud of our network, working for this network here. When it comes to credibility of journalism is what I was speaking with Ajay, Jatin at this point of time. What are your views on this? कोई जो खबर होती है वो शोर नहीं होती है, और अगर खबर शोर नहीं है, वो नॉइस नहीं है, तो कहां सुनी जा सकती है, कहां देखी जा सकती है? दर्शकों के सामने ये सवाल हमेशा होता है। तो वो इसीलिए आईटीवी नेटवर्क को चुनते हैं, और इसीलिए हमारे दर्शक हम पे पूरा विश्वास करते हैं। हमने एक गुडविल बनाई है, एक क्रेडिबिलिटी है हमारी, जिस पर यकीन है दर्शक को। तो हर उस सवाल का जवाब दर्शक को मिलता है, और पत्रकारिता क्या होती है वो समझने का मौका जो है दर्शक को मिलता है कि सच्ची पत्रकारिता क्या होती है। एग्जैक्ट जो फैक्ट्स होते हैं हम उनके साथ चलते हैं। इसीलिए जो आईटीवी नेटवर्क का ये कॉन्क्लेव होता है, एनुअल कॉन्क्लेव, और समय समय पर भी हम राज्यों में कॉन्क्लेव कराते रहते हैं, लेकिन देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच हम इसे क्यों कह रहे हैं ये समझना बेहद जरूरी है। ये देश की राजधानी दिल्ली में भले ही हो रहा है, राजधानी से पूरा देश चलता है, सब कुछ इफेक्टेड होता है, लेकिन हमारे इस मंच का जो इम्पैक्ट है वो इंटरनेशनल लेवल पर होता है, क्योंकि तमाम जो दिग्गज हैं वो इसमें मौजूद होंगे। और काउंटडाउन जैसा कि शुरू हो चुका है, हर किसी को इंतजार है। जब हमारी बात भी हो रही है लोगों से, तो जब उन्होंने प्रोमो देखा है तो वो यही इंतजार कर रहे हैं लगातार कि कब ये कॉन्क्लेव जो है, ये मंच जो है वो दर्शकों को देखने को मिले। और जो तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो की हम जहां बात कर रहे हैं, या दूसरे जगत से जुड़े हुए, तमाम फील्ड से जुड़े हुए सवालों के जवाबों की बात करें, तो हर एक सवाल का जवाब दर्शक तक पहुंचता है आईटीवी नेटवर्क से, और देश के सबसे बड़े राजनीतिक मंच से उन सवालों का जवाब दर्शक को मिलेगा जो लगातार पिछले कुछ दिनों में अलग अलग फील्ड में उन्होंने सवाल तलाशने की कोशिश की है, क्योंकि सभी दिग्गज यहां पर मौजूद होंगे, और उन दिग्गजों के माध्यम से जब ये जवाब दर्शक तक पहुंचेगा, एक आम आदमी तक पहुंचेगा, तो उसके लिए इससे बेहतर मंच कुछ नहीं हो सकता। तो दर्शकों को भी उतना ही बेसब्री से इंतजार है। जैसे ही काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, और बिल्कुल बस कुछ ही वक्त में दिग्गज जो है वो मंच पर मौजूद होंगे। Right, Jatin, stay on with us. Sujata Dwivedi, my colleague, is also with us on the broadcast this morning. Sujata, we are quite excited to begin our telecast of
India News Manch 13-hour-long telecast having 30 sessions with big political leaders and policy makers, and of course including CMs and governors and union ministers, names like Manish Sisodia at this point of time, RK Singh. We have all the details flashing on the screen. Sujata, give us your views on this important conclave that we are hosting today. Well, as you rightly said, that the who's who of politics and politicians and policy makers are going to be on this platform, and this particular platform, because it is one of the biggest conclave that is going to take place. And when we talk about who are going to be a part of it, like you rightly said, that right from state ministers to cabinet ministers to many more general secretaries and chief ministers, we see that it is going to be one of the biggest conclaves. And keeping in mind the events that have taken place in the past year, be it the turnouts into the politics or in any other field, right? We also see that some of the Bollywood actors are going to be a part of this conclave as well. So keeping in mind the series of events that have happened, I think there will be a lot of questions that will be there in the mind of we journalists, or be it the mind of the viewers, who would want the answer directly from the person, the people who were a part of this, and of course they being present on our platform to answer those questions, and be it the fearless questions that are going to be there for them, and of course they will have to answer that. And it's not going to be our questions as only; it is going to be the viewers' question who's going to it will be them who will be asking them in an indirect manner by us. So of course we see that a biggest conclave, and there will be it is, as you rightly said, it is going to be 30 sessions, which is going to start soon at 9 a.m. and continue till late evening, wherein there will be continuous sessions on. Of course, we see that one of the biggest events. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.